गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक थिंक टैंक जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक फुली फंक्शनल डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है उसको रीस्टोर करना बहुत मुश्किल होगा। और क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इस इशू के ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एमर्ज हो चुके हैं। तो अब हम ये इशू देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ क्या है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस जो है रेगुलेट और फैसिलिटेट करवाती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 164 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। 1995 में काम करना शुरू किया इसने। हाईएस्ट अथॉरिटी जो डब्ल्यूटीओ की है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 साल में एक बार मिलते हैं, है ना। तो अगर हम देखें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो कि डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है, वो जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, डिस्प्यूट बिटवीन डब्ल्यूटीओ मेंबर्स से डील करने के लिए बनाई गई है। और जो किसी भी एग्रीमेंट जो कि या फिर फाइनल एक्ट ऑफ यूरुग्वे राउंड से डब्ल्यूटीओ बना, तो मतलब डब्ल्यूटीओ के किसी भी इशू की वजह से अगर डिस्प्यूट आ गया है, तो या डब्ल्यूटीओ की किसी ट्रीटी की वजह से डिस्प्यूट आ गया है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी काम करती है। ठीक है। डीएसबी के पास अथॉरिटी है कि डिसीजंस ले सके, पैनल्स बिठा सके। अपीलेट बॉडी भी की तरह भी ये काम करती है रिकमेंडेशंस देने के लिए किसी भी 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो। ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ की जो डीएसबी है वो क्यों डिफंक्ट पड़ा है? क्योंकि जो यूएस है वो बार बार वीटो कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा ना कि डब्ल्यूटीओ में हर मेंबर कंट्री के पास एक वीटो है। मतलब जब क्योंकि ये पूरी बॉडी कंसेंसस से चलती है, तो एक तरह से सबके पास ही वीटो हो गया। एक भी कंट्री अगर राज़ी नहीं हुई है तो उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो है कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो एक सीरियस क्राइसिस चल रहा है। यूएस जो है वो नहीं मान रहा है, अपॉइंटमेंट ही नहीं करने दे रहा है अपीलेट बॉडी के ऊपर जजेस की, न्यू जजेस की। कह रहे हैं कि जुडिशल ओवर रीच हो जाएगा इससे। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के लिए कि डब्ल्यूटीओ की ऑब्लिगेशंस वो कंप्लेंट्स के थ्रू, डीएसबी के थ्रू जो है वो एनफोर्स करवा सकें। तो जीटीआरआई की रिपोर्ट कह रही है कि प्रोटेक्शनिज्म बहुत राइज पर है ग्लोबली। सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएशन की ज़रूरत है। कंसेंसस जो अराइज करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। आपको पता होगा कि मोर देन 1/4 जो टोटल डिस्प्यूट्स हैं डब्ल्यूटीओ में वो यूएस के लॉज और मेजर्स के रिलेटेड हैं। इसीलिए ऑफ कोर्स यूएस जो है वो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉपर माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन जाम्बिया। इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो एक इंडियन इंडस्ट्री डेलीगेशन को भेजने वाली है कॉपर रिच जाम्बिया में, ताकि कॉपर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर देखे जा सके। अगर हम कॉपर माइनिंग के बारे में देखें तो कॉपर एक ऐसा केमिकल है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। और वेरियस ओर्स जो है में मिलता है, ये की फॉर्म में मिलता है ये अर्थ के क्रस्ट में। 2 तरह की माइनिंग की जाती है इसको डिराइव करने के लिए। ओपन पिट माइनिंग, अगर शैलो डिपॉजिट्स हैं को कॉपर के तो ओपन पिट माइनिंग की जाती है। अगर डीपर डिपॉजिट्स हैं तो अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। चिले जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है इस कॉपर का। 27% ऑफ ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन चिले में ही होती है। उसके बाद पेरू है। एप्लीकेशंस देखें अगर हम कॉपर की, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग और कंपोनेंट्स में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इवन प्लम्बिंग में पाइप्स और ट्यूब्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास जैसे अलॉयज़ बनाने में कॉपर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। रूफिंग मटेरियल, आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस भी इसकी बहुत सारी हैं, है ना। अगर हम इंडिया में देखें तो टोटल अगर वर्ल्ड में 700 कॉपर माइंस हैं तो उसमें से 127 तो इंडिया में ही है। ठीक है। लेकिन जो कॉपर की रिजर्व्स और प्रोडक्शन है वो इंडिया में पुअर है। मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डावोस मीटिंग इन 2024। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जनवरी 19 को डावोस की जो मीटिंग है WEF की वो ख़त्म हुई है। 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में चला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग।
और इस बार का थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन की। 1971 में क्लॉस श्वाब ने इसको बनाया। कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, बस एक फोरम बन के आ गया ये सामने पॉलिटिकल, बिजनेस और कल्चरल और अदर लीडर्स का, ठीक है, जो कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस शेप करते हैं। डेवोस की जो मीटिंग है वो हर साल जो है जनवरी में होती है, स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली डेवोस है। और ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है कि ग्लोबल लीडर्स को जो है एक फोरम पर लेकर आके डिस्कशंस करवाई जाएँ। तो कई तरह की रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है WEF, यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या मीटिंग में डिस्कशंस क्या हुई हैं इस बार। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और पॉजिटिव्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो नेगेटिव से जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वॉर और अनसर्टेनिटी के ऊपर भी बात हुई कि चाहे इसराइल गाज़ा की वॉर हो, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, उससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उन पे अनसर्टेनिटी आ रही है, इवन फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। क्लाइमेट के ऊपर बात हुई कि बिजनेसेस को क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना ज़रूरी है। चाइना की इकोनॉमी पे बात हुई कि जो है चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। फिर इंडिया स्पेसिफिक भी ऑब्जर्वेशंस की गई कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, टैलेंट हो, हेल्थ केयर हो, फ्यूचर जो है इंडिया का ब्राइट है, ठीक है। और इंडिया के साथ मिलकर एक ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया WEF ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऑफ कोर्स मिलके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस अलायंस का कि विमेन के हेल्थ, एजुकेशन और इंटरप्राइज से रिलेटेड फील्ड्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉलेज शेयरिंग लाई जा सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइट प्रोग्राम। इकोनॉमी के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 17,500 करोड़ रुपए जो है वो साइट प्रोग्राम, साइट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है उसके लिए रखे गए हैं, ताकि इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जा सके। तो साइट प्रोग्राम एक सब कॉम्पोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, जिसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का मोटिव है, ठीक है। तो इसमें दो फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म्स जो है वो लाने का प्लान है। पहला तो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स को कैसे हम इंसेंटिवाइज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग उसकी, दूसरा कि ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक इंसेंटिव स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए जाएंगे ताकि मिशन जो है वो ठीक से प्रोग्रेस हो सके। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी का ही मिशन है ऑफ कोर्स, ताकि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा सके प्रोडक्शन, यूसेज और एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और इट्स डेरिवेटिव्स का। और क्यूमुलेटिव 1 लाख करोड़ रुपीज़ तक का जो है फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट्स हम जो है कम कर पाएंगे उसकी वजह से 2030 तक। 8 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट्स हम इसमें लाना चाहते हैं। 50 जो है MMT हम इसमें जो है पर एनम ऑफ CO2 एमिशंस जो है बचा पाएंगे, ठीक है। कोई स्टेट वाइज एलोकेशन नहीं की गई है इस मिशन के अंदर, और जो है इसमें R&D और जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर ही जो है जैसे लो कार्बन स्टील, मोबिलिटी, शिपिंग, पोर्ट्स, इससे रिलेटेड प्रोविजंस भी रखे गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस से जो है बनाई जाती है ये, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ लिया जाता है और उससे जो है हाइड्रोजन डिराइव की जाती है। तो बेसिकली ये क्लीन और एमिशन फ्री फ्यूल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हैवी श्योर वैक्सीन। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। उन्होंने जो है हेपेटाइटिस A की वैक्सीन बनाई है हैवी श्योर नाम से, हैदराबाद में। हैवी श्योर वैक्सीन जो है 2 डोज़ की वैक्सीन है। पहली डोज़ जो है 12 महीने की एज में दी जाती है, उसके बाद सेकेंड डोज़ जो है वो 6 महीने बाद दी जाती है। पार्ट ऑफ द रूटीन इम्यूनाइजेशन बनाना चाहती है ये जो कंपनी इस वैक्सीन को चिल्ड्रन की। तो हेपेटाइटिस A क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जो कि हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस बेसिकली तब हो जाता है जब कोई पर्सन फूड या वाटर इंजेस्ट कर ले जो कि कंटेमिनेटेड है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस से, ठीक है। तो क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होती है ये ऑफ कोर्स। कोई सिम्टम्स इसके कई बार तो दिखते ही नहीं है,
और पर्सन को पता ही नहीं लगता कि वो इन्फेक्टेड है, और लेकिन जो है धीरे धीरे कॉमन सिम्टम्स इमर्ज होने लगते हैं, जैसे फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डार्क कलर्ड यूरिन, जॉन्डिस। ट्रीटमेंट, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन रिकवरी जो है वो धीरे धीरे होती है, कई बार हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने अपना कॉन्टैक्ट रीस्टैब्लिश कर लिया है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर के साथ मार्स पर। तो इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर एक स्मॉल ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई किया मार्स पर नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ, और इसको भेजा गया ताकि एक्सपेरिमेंटल फ़्लाइट टेस्ट किए जा सके मार्स के ऊपर। और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट था ये ऑफ कोर्स रोवर के जो मिशन के से, इसको सिर्फ फ्लाई करने के लिए जो भेजा गया। और ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट बना जिसने एक पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट की एक किसी और प्लैनेट के ऊपर, बेसिकली मार्स के ऊपर, और जो कि 40 सेकंड के आसपास जो है वो ब्लास्ट की। और मार्स के थिन एटमॉस्फेयर में, जो कि कंड्यूसिव भी नहीं है फ्लाई करने के लिए, वहाँ पर ये फ्लाई कर पाया। तो परसिवरेंस रोवर क्या है? परसिवरेंस रोवर एक रोबोटिक एक्सप्लोरर है जो कि मार्स पर लैंड किया साइंस ऑफ एंशंट लाइफ सीख करने के लिए। सैंपल्स ऑफ रॉक और रेगोलिथ भी इसने कलेक्ट किए। सक्सेसफुली लैंड किया ये 2021 में मार्स के जजीरो क्रेटर पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बीपीआरडी ने रिसेंटली यूज़र्स को कहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू कई तरह के स्कैम्स जो हैं वो परपेचुएट किए जा रहे हैं, तो उससे परपेट्रेट किए जा रहे हैं, तो इसलिए उससे बचने की ज़रूरत है। तो बीपीआरडी जो है 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है सेटअप किया गया। इसने पुलिस रिसर्च और एडवाइजरी काउंसिल को रिप्लेस किया। तो पुलिस की जो नीड्स और प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको बनाया गया। स्टेट्स को हेल्प करता है, ये असिस्ट करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस में, और इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल पुलिस मिशन से रिलेटेड भी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is WTO dispute settlement body. This topic is important for your international relations and economy section. So according to an economic think tank GTRI report, restoring a fully functional WTO dispute settlement body may take long because of significant differences which have emerged between developed and developing countries on this issue. So this is coming because 164 member WTO is set together in Abu Dhabi for the 13th ministerial conference very soon. So what is WTO? It is an intergovernmental organization which regulates and facilitates international trade between nations. It is the world's largest international economic organization which has 164 member states who represent about 98% of global trade and global GDP. It officially began operations in 1995 in consonance with Marrakesh Agreement, which marked the culmination of Uruguay rounds of conferences. And the highest authority of WTO is Ministerial Conference, and it usually convenes biennially, which means every 2 years, and all the decisions of WTO are taken by consensus. So which means if any country is opposed to any decision, then of course it would act like a veto and that decision would not be taken. So US is becoming a roadblock in WTO negotiations these days. Okay, so WTO has three major bodies: General Council, Dispute Settlement Body, and the Trade Policy Review Body. What is Dispute Settlement Body? It, of course, aims to deal with disputes between WTO members. These disputes may arise with respect to any agreement contained in the final act of the Uruguay round. So, this body has the authority to make decisions and review those decisions and act as an appellate body also to make recommendations. Okay, so why does the WTO DSB remain defunct? So it is in the middle of a serious crisis because the appeal mechanism is not functioning, as the US is blocking appointments of new judges to the appellate body. As I've told you earlier, that all decisions in the WTO are taken by consensus. So the US is not ready to accept the new appointments in the appellate body, and it has become extremely difficult for the WTO members to enforce WTO obligations through complaints against measures that they believe that are being violated.
So, what are the highlights of GTRI report? This report is saying that protectionism is on the rise due to lack of a functional dispute settlement body of the WTO, and many of the issues, trade related issues, require significant compromise and negotiation, but it has been under limbo since a long time because of US reluctance to accept the mandate. There is a need to reach a consensus on reforming the dispute settlement system also, but it is a very complex procedure because one fourth of all the disputes at WTO are basically challenges against US laws and other measures. So the next topic is copper mining opportunities in Zambia. This topic is important for your economy and your international relations. So Ministry of Mines has proposed sending an Indian industry delegation to copper-rich Zambia to discuss potential copper exploration and mining projects in African country. So copper is basically a chemical element with a distinctive reddish brown color. It is an excellent conductor of heat and electricity. It is found in various ores in Earth's crust. So mining is used to obtain it, of course, to extract it. So there are two types of mining. Open pit mining is done if the deposits are shallow. Underground mining is done if the deposits are deeper. So Chile is the top copper producer country in the world, followed by Peru. So what are the applications of copper? So copper is widely used in electrical wiring and components due to its excellent conductivity. It is also commonly used in plumbing for pipes and tubing. It is also uh, alloyed with other metals to create alloys such as brass. It is also used in electronic devices. It is used in roofing materials and architectural applications. If we look at copper mining in India, then about 700 copper mines in the world are operational, and out of them, 127 are in India. Yet, India is poor in terms of copper reserves and production. India has low grade copper ore. Okay, compared to international average, international one. So Madhya Pradesh is the leading producer of copper in India. So the next topic is Davos meeting in 2024. This topic is important for your international relations. So this year's World Economic Forum annual meeting was held between 15 January to 19 January at Davos, that is in Switzerland. The theme of this meeting was rebuilding trust. So World Economic Forum is an NGO basically for public private cooperation. It was founded in 1971 by uh, German engineer Klaus Schwab. So it has no independent decision making power. It just wants to influence the global minds. So Davos meetings happen every year in January in Davos, and the objective of these meetings, is to influence the global leaders on imperatives of the year ahead. So it also WEF also releases a series of annual reports like Global Competitiveness Report, Global Information Technology Report, Global Gender Gap Report, etc. So if we look at the key takeaways of Davos meeting 2024, then many transformational issues were discussed. For example, the artificial intelligence, and it was agreed by the participants that the positives of AI outweigh the negatives. So human intelligence did not face a major threat from AI. And with respect to war, uncertainty was discussed, that the various wars that are being currently in operation around the world are affecting global supply chains, and there is also even uncertainty around food security. Climate also was discussed, with the businesses being asked to adapt to climate change. China's slowing down was also discussed, and how the US is attempting to isolate China, as evidenced in semiconductor trade standoff. India specific observations were also made. For example, the McKinsey company said that India is transforming rapidly into one of the fastest growing large economies in the world, and it is when it comes to technology, talent, healthcare, and other areas, its future is very bright and it is worth paying attention to. Summit also announced the launch of Global Good Alliance for Gender Equity and Equality with the support and endorsement by WEF and Government of India. So the objective of this alliance is to bring together global best practices and knowledge sharing and investments in the fields of women health, education, and enterprise. So the next topic is site program. This topic is important for your
environment section and also our economy section. So about 17,500 crore rupees have been set aside for strategic interventions for green hydrogen transition program, that is the SITE program, for domestic electrolyzer manufacturing, green hydrogen production. So what is SITE program? It is a subcomponent of National Green Hydrogen Mission, uh, and the aim is to bolster domestic electrolyzer manufacturing and green hydrogen production. It has two distinctive financial incentive mechanisms. First one, of course, pertains to the manufacturing of electrolyzers. The second one is for the production of green hydrogen. And uh, specific incentive schemes are designed for these program to evolve as the mission would progress in the future. So Solar Energy Corporation of India is implementing this scheme or this mission. So what is National Green Hydrogen Mission? Ministry of New and Renewable Energy started this mission. And this mission would want India to be a global hub for the production, usage, and export of green hydrogen and its derivatives. So through green hydrogen, we want to reduce a cumulative 1 lakh crore worth of fossil fuel imports by 2030, and we also want to leverage over 8 lakh crore rupees in total investments in this field of green hydrogen, and we want to save nearly 50 mmt per annum of CO2 emissions through green hydrogen usage. Remember, there is no state-wise allocation under this National Green Hydrogen Mission. So what is green hydrogen? It is produced by the electrolysis of water, where water is split into hydrogen and oxygen. So it's basically a clean and emission-free fuel, which does not even lead to significant carbon emissions. So the next topic is, have you sure a vaccine? This topic is important for your social issues. So recently, Indian Immunological Limited, which is a wholly owned subsidiary of National Dairy Development Board, has launched India's first indigenously developed hepatitis A vaccine, Havisure, in Hyderabad. Havisure is a two-dose vaccine. First dose would be administered above 12 months of age in children, and the second one would be done after at least 6 months after of the first dose. The vaccine is recommended for children as part of the routine immunization program. What is hepatitis A? It is inflammation of the liver caused by hepatitis A virus. The virus infects primarily the uninfected person if he or she ingests food or water which is contaminated with the feces of an infected person. So the hepatitis can be an acute infection or a chronic long-term infection, and the symptoms of hepatitis A do not appear usually, but once they start appearing, it includes fever, loss of appetite, diarrhea, abdominal discomfort, dark colored urine, jaundice. Currently, there is no specific treatment for hepatitis A. The recovery may take several weeks or months. So the next topic is Ingenuity Mars helicopter. This topic is important for your science and tech section. So NASA has re-established contact with Ingenuity helicopter on Mars as per the US Space Agency. So Ingenuity Mars helicopter is a small autonomous aircraft which flew to Mars aboard NASA's Perseverance rover. It was sent to Mars to perform experimental flight tests, and it was, of course, completely independent from the NASA's Perseverance rover mission. So, Ingenuity Mars helicopter became the first aircraft in history to make a powered controlled flight on another planet. This flight lasted for about 39.1 seconds, and it managed to fly in Mars' thin atmosphere, which is not conducive for flying. So what is Perseverance rover? Of course, it is a robotic explorer to land on Mars, which would seek signs of ancient life and collect samples of rock and regolith. It successfully landed on the surface of Mars' Jezero crater in 2021. So the next topic is BPRD. This topic is important for your governance section. So recently, the Bureau of Police Research and Development has warned users of different scams perpetrated through messaging platform WhatsApp. So what is BPRD? BPRD was set up in 1970 under the Ministry of Home Affairs. The objective of BPRD is to identify the needs and problems of the police in the country. It is also assisting the states in modernization of the state police forces. And more recently, BPRD has also been entrusted with the responsibility of anchoring and coordinating the work of the National Police Mission. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.